श्रीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहो भवे श्रियं मनसा काममाकुते वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीसहिताम्यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासयमि कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः श्रियं त्रिविधानि शिखरितपश्य मे गृहे निज देवी मातरां श्रियं वासयमि कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रहुतं गावो दास्योश्वान्मिन्देयं पुरुषानहं यस्ते प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमनवः सूक्तं पञ्चदशर्षं च श्रीकामः स्तुतिं जपेत् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ये त्रिधानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते कागुसहस्रयोजन विधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे प्रदक्षिणापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि श्रीशामिकाभ्यां नमः विशेषार्घ्यं दद्यात्। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भवार्णवात् द्वैमातृकृपा सिन्धो खाणमातुरागज प्रभो वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफल अर्घेण सफलोस्तु वरदोस्तु लक्ष्मी प्रदोस्तु मम कार्यं निर्विघ्नं अस्तु सदा मम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि। हस्ते पुष्पम धारित्वा प्रार्थयेत, हाथ में पुष्प लेकर के अपने कल्याण के लिए मनोरथ की पूर्ति के लिए प्रार्थना करिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय